at 150. I thought, Amit, no, it's Delhi, it's going to be special. How big hall we can take it to be filled? And guys, you proved it. Yes. We are So, before we start, let us know. I think my audio is a little high. क्या हम लोग हैदराबादी हिंदी में बात करें या फिर इंग्लिश? So, like, we do mixed. Here, mixed. Sure. English, okay, fine. English and Hindi So again, guys, this is like, I was just talking to Amit. This is the first time I'm doing a fan meetup in Delhi. So again, I want to thank Asus and Qualcomm for actually doing it in such a way that we had a vision. So again, thanks to Asus and Qualcomm for making this possible. And we'll be having a lot of interesting things. Some giveaways जो अमित ज़्यादा करता है, लेकिन आज मैं भी कुछ कर दूँगा. Finally, Ranjit bhai is doing a giveaway and not of one smartphone but a lot of surprises. Let's not reveal that. Yeah. Stay tuned. And before we start this event, guys, how many of you are on Twitter right now? Perfect. So there are two hashtags. One which you are already seeing on the stage, and the second one is flagship redefined. You can again go to Twitter handle of Asus India and find the hashtag, or you can find it on our profiles also. India has always been very close to my heart, and indeed, I am so excited to be here with you. Thank you. It's our incredible hero. Thank you. Raniaba. It is the fastest phone with AI features. Now we'll learn your likes and preferences. With your support, we will keep bringing the effortless and joyful smartphone for everyone in India. Once again, thank you so much for your great support. We have a special gift for you, as Mr. Jerry is here. We have a fish bowl over there, sir. So how many, Ranjit, let's ask how many of you have filled the details in the fish bowl, I mean the entry? So one of you will be winning the latest, which smartphone is this? Yes, so yeah, can you please have the fish bowl? And sir, can you just pick up one? For the friends, 1 plus 1. Yeah, one from me. This is Mr. Sagar. Sagar, I'll tell your phone number. It's written 971-633-8301. This gift One more is from me. Now, Amit KR Tiwari. Phone number. Amit, KR Tiwari. I think he's a doctor. Very bad handwriting. The number is 965405161. We can have a hashtag trend करवाना है. Let's do it because we want to showcase that we can do, guys. So keep using the hashtags and it's sure. Thank you, Ranjit. Thank you, Amit. Hello, everyone. Delhi. Come on, yeah, Delhi. इतना जोश होना चाहिए कि पूरी होटल हिल जाए. Come on, guys. That's great. So, are you guys happy with the Zenfone 5G launch today?
Okay, so many of you actually haven't. So probably you don't even know about the features, or you may have seen actually Ranjit's video, so you know about it. But what I'm going to do is quickly tell you about the product, okay? Because thereafter we can take your questions and have some exciting contests, okay, which are linked to Zenfone 5Z. So I am Dinesh Sharma. I actually lead the mobile business for Asus in India, as you can see out here. And I'm really inspired today by both Ranjit as well as Amit for the kind of fan following that they've built with you guys. And I today promise you guys that Asus will do equally good work as Ranjit and Amit have been doing for so much time in their field to create an exciting fan base from your side. So really appreciate your coming here and attending this event. So let's, quickly actually, start with the product itself very quickly. I won't take much time. So, the first phones which actually started were actually duplex phones. That means it was only one-to-one communication which was possible on those mobile phones. Then it came the GSM technology, CDMA technology, and feature phones came in, so we could talk one-to-many. The networks became much more smarter. And then we had the smartphone evolution, and the whole Android and the whole app ecosystem which actually exists, which you have millions of apps available to really experience the Android phone. And now friends, it's time to move up to an intelligent phone. Okay? And this intelligence in the phone is actually getting powered by artificial intelligence in the phone itself. So I'll talk a few things about AI later. So very quickly, talking about the phone, Zenfone 5Z is a phone which will redefine the flagship segment in India. And let's start with the design. So both the front and the back of the phone, you've got a nice 2.5D glass. Have you guys seen the Zenfone 5Z? Yes. Oh, okay, so no problem. I'll actually tell you about the product by showing you the product as well. So Zenfone 5Z, front and back, as you can see, it's 2.5D glass. It looks really cool and beautiful. It's got a 90% screen to body ratio. It's just 7.7 mm thin with an aluminum body on the side, which is zircon sandblasted, and gives a super premium feel to the product. It will come in two fantastic colors, Meteor Silver and Midnight Blue. So talking about the display, it's got a notch display which is 6.2 inches, Full HD, 515 nits brightness and DCI-P3 color gamut, which means it really, when you look at the display, you feel that the colors are as good as real life what you see with your eyes. What we've got on this phone is the world's fastest, smartest flagship processor, which is the Snapdragon 845. And what we've done is we've actually made full use of the AI engine capability. AI means artificial intelligence. So artificial intelligence capability के साथ Snapdragon 845 को यूज किया गया है Zenfone 5Z में. तो ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट और स्मार्टेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन है. और क्योंकि आप लोग सब टेक एंथुसियास्ट हो, तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ कुछ ऐसी स्लाइड्स बताऊंगा जो आपको पसंद आए. So इसके अंदर है Snapdragon 845. इसका जो रैम है वो है LPDDR4X रैम, और इसकी जो स्टोरेज है वो है UFS 2.1. सो इससे आपको मिलता है एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन जो इससे फास्टेस्ट फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देने में आपको मदद करता है. इसके अलावा अगर आप कनेक्टिविटी की भी बात करें तो आपको मिलता है डुअल 4G वोल्टेज सपोर्ट. मुझे याद है जब हमने मैक्स प्रो M1 लॉन्च किया था तो रंजीत का क्वेश्चन था मुझसे कि सर इसमें डुअल 4G वोल्टेज सपोर्ट है कि नहीं. मैंने कहा यस इसमें है. एंड मुझे उस टाइम पे रंजीत का बहुत अच्छा रिएक्शन मिला था और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने चैनल पे भी कवर किया था मैक्स प्रो M1 के बारे में. तो अभी हमने इसके अंदर डुअल 4G वोल्टेज सपोर्ट इसमें भी दिया है, और ये चारों नेटवर्क पे चलता है जो आपको पता है, रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, चारों नेटवर्क पे वोल्टेज सपोर्ट करता है. इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट है. तो ब्लूटूथ 5.0 जो सपोर्ट है उसमें आपको मिलता है मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी. जब मैं ये फोन अपने गाड़ी में यूज करता हूँ तब ये फोन मेरे वॉच के साथ भी कनेक्ट होता है और कार के ऑडियो सिस्टम के साथ भी कनेक्ट होता है.
तो आपको इसमें मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टिविटी एक साथ बनती है। उसके अलावा इंडिया में आप कैट 12 नेटवर्क, कैट 12 FT सपोर्ट कर सकते हो, बिकॉज 3 कैरियर एग्रीगेशंस तक सपोर्ट है इंडिया के 4G नेटवर्क्स में, और ये फोन कैट 12 LTE सपोर्ट करता है, GPS NFC भी है। गेमिंग की बात करें, ये आप लोग की फेवरेट गेम है मुझे पता है, और PUBG plays brilliantly on Zenfone 5Z friends. PUBG plays brilliantly on Zenfone 5Z. Later on in the demo zone, you can actually play PUBG on Zenfone 5Z and experience PUBG on Zenfone 5Z. So what we've done is, you got a brilliant display, you got a very powerful processor, you got LPDDR4X RAM, UFS 2.1 memory, Snapdragon 845 processor, plus an amazing audio experience. बहुत ही अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस है Zenfone 5Z पे। तो जब आप इस पे PUBG खेलेंगे, आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो किसी और स्मार्टफोन पे आपको नहीं मिलेगा। फोटोग्राफी की बात करें, ओके, फ्लैगशिप फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? फ्लैगशिप पे, यस, यू गाइस एस्पायर टू बी यूट्यूबर्स, आई कैन सेंस इट। सो फोटोग्राफी की अगर बात करें तो इसमें है 12 मेगापिक्सल मेन कैमरा, जो सोनी IMX363 सेंसर है। सोनी IMX363 सेंसर का चॉइस हमने क्यों किया, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सोनी IMX363 सेंसर में 1.4 माइक्रोमीटर का पिक्सल है, जो कि सोनी के फ्लैगशिप सेंसर में सबसे बड़ा पिक्सल साइज है, और इसके साथ आपको 12 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है, जो फोटोज के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको बहुत अच्छा रेजोल्यूशन मिल रहा है, आपको बहुत अच्छा, बहुत सबसे बड़ा पिक्सल साइज का सेंसर मिल रहा है। तो उससे जो आप लो लाइट में भी फोटोग्राफी ले सकते हो, वो बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हो। एक अच्छा मिड रेंज स्मार्टफोन भी डे लाइट में बहुत अच्छी फोटोग्राफी देता है, मगर लो लाइट में अच्छे फोटोग्राफ निकालने के लिए आपको फ्लैगशिप सेंसर की जरूरत है, जो सोनी IMX363 देता है। इसके साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है, f1.8 अपर्चर है, और एक और एडिशनल हार्डवेयर है अच्छे फोटोग्राफ्स के लिए, वो है कलर टेम्परेचर कलर करेक्शन सेंसर। तो अगर आप यहाँ पर LED को ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 सेक्शंस हैं, जिसमें से एक में कलर करेक्शन सेंसर है। कलर करेक्शन सेंसर कलर्स को बहुत ही एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करता है, और आपके फोटोग्राफ्स और भी अच्छे आते हैं। इसके अलावा इसमें 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। सिर्फ एक अच्छा हार्डवेयर नहीं है कैमरा में, पर इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ट है, जिसमें सीन डिटेक्शन होता है। तो आप कोई भी सीन को जब शूट करना चाहेंगे, तो आपका जो फोन का मोड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा उस सीन के लिए। पहले मोड्स आते थे, लेकिन आप फोटोग्राफ फोटो पे ही लेते थे। अब इसके अंदर जो मोड्स है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे, और आपको ऑप्टिमम बढ़िया पिक्चर्स मिलेंगे हर एक सीन के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप्स की सीन है इसमें। कभी कश्मीर जाएंगे तो बर्फ में भी आपको रिफ्लेक्शन ही मिलेगा, बहुत अच्छे से फोटो लेगा उसमें। और अगर AI गैलरी की बात करें तो ये फोन आपसे बहुत कुछ सीख के बहुत कुछ इंटेलिजेंटली और इंट्यूटिवली करने लगता है। तो AI गैलरी की अगर बात करें तो इसके अंदर है, अगर आप फोटो लेते हैं तो सारे फोटोज में से सब लोगों के फेसेस ये आइडेंटिफाई करके लिस्ट करेगा। इसमें से आप चूज करेंगे कि मेरे फैमिली में ये लोग हैं, तो इनके फोटो सिलेक्ट करके मैं फैमिली एल्बम बना लूँगा। बाद में आप जब अपने फैमिली के साथ फोटोज लेंगे, ऑटोमेटिकली उन लोगों के पिक्चर जो आपके साथ है वो फैमिली फोटो फोल्डर में चले जाएंगे। सिर्फ वही नहीं, जब लेट्स से अगर उन्होंने व्हाट्सएप पे आपको फोटोज भेजे, तो वो फोटोज भी जाके फैमिली फोल्डर में जमा हो जाएंगे। तो आपको एक ही जगह पे अपने फैमिली की सारी पिक्चर्स मिलेंगी। एक और चीज जो आप लोग फ्लैगशिप में पूछते हो वो है कि फास्ट चार्जिंग। करेक्ट, सबको फास्ट चार्जिंग पसंद है ना यहाँ पे? बहुत बढ़िया, यस, ओके ग्रेट। सो इसमें भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट है, जिससे जो बैटरी है इसको की 60% 38 मिनट्स में चार्ज हो जाती है। लेकिन फास्ट चार्जिंग का एक साइड इफेक्ट होता है, वो है ये कि जब आप फास्ट चार्ज करते हो फोन को तो बैटरी की लाइफ इंपैक्ट होती है और कम होती है। तो हमने इस फोन के साथ फास्ट चार्जिंग तो रखा है, पर एक नया इनोवेटिव फीचर डाला है, और वो है AI चार्जिंग।
AI चार्जिंग आपसे सीखता है कि आप कब फोन को चार्जिंग पर डाल रहे हो जब आप यूज नहीं कर रहे हो, और उस पीरियड में जब आप अपने फोन को चार्जिंग पर डालते हो जब आप यूज नहीं करते हो, तब वो फोन की बैटरी को 80% तक चार्ज करता है और उसके बाद 80% तक ही रखता है, और 2 घंटे पहले आपके यूज करने के फोन को 80% से 100% तक ले जाता है, और इससे आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो 2 गुना हो जाती है, 2 गुना। Isn't it cool guys? 2 times battery life along with fast charging, और जब आप दिन में इसको यूज करते हैं तो ये क्विक चार्ज 3.0 पे फास्ट चार्ज करेगा। So that's the benefit. प्लस एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें USB-C टाइप कनेक्टर है, तो आपको चार्जर लेकर घूमने की भी टेंशन की जरूरत नहीं है। कोई भी C टाइप चार्जर कहाँ बाहर भी मिल जाएगा, वहां पर भी आपकी बैटरी फास्ट चार्ज होगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैन्युफैक्चरर्स मिस आउट करते हैं वो है ऑडियो। जब आप अपना स्मार्टफोन यूज करते हैं, चाहे आप फोन पे बात करें, चाहे आप म्यूजिक सुने या आप वीडियो देखें, हर एक सिनेरियो में आप ऑडियो को यूज करते हैं। लेकिन ऑडियो एक बहुत ही निग्लेक्टेड डिपार्टमेंट रहता है स्मार्टफोन के मामले में, तो हमने इसमें आपको एकदम फ्लैगशिप लेवल ऑडियो एक्सपीरियंस दिया है। इसमें डुअल 5 मैग्नेट स्पीकर्स है ऊपर और नीचे, इसके अलावा इसमें NXP स्मार्ट एप्स है वो भी डुअल। इसमें नया ऑडियो विजर्ड इक्वलाइजर ऐप हमने डाला हुआ है, क्वालकॉम का APTX सपोर्ट है ऑडियो एनहांसमेंट के लिए, हाई रेज ऑडियो सपोर्ट करता है, और फोन के साथ आपको हाई रेज ऑडियो हेडसेट इन द बॉक्स फ्री मिलता है। इसके लिए जब आप गेम खेलोगे इस पे, जब आप वीडियो देखोगे इस पे, रंजीत की वीडियो देखोगे, अमित की वीडियो देखोगे, तो उसका भी जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो कोई और फोन पे इस तरीके का नहीं मिलेगा। ओके, रिंगटोन भी इसमें अडैप्टिव है, तो अगर कभी हम ऐसे साइलेंट मीटिंग में आ गए और आपने अपना फोन ऐसे साइलेंट पे नहीं रखा तो आपका रिंगटोन जोर से नहीं बजेगा, आराम से आस्ते से बजेगा, क्योंकि ये फोन ऑटोमेटिकली सेंस करता है। इसमें बाय द वे 3 माइक है। और ये क्वेश्चन था, यहाँ पर एक सवाल था ZUI के बारे में, स्टॉक एडवर्ट के बारे में, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम कम से कम ब्लोटवेयर अपने फोन्स में डालें, या ब्लोटवेयर, जो ब्लोटवेयर आप कहते हो प्री इंस्टॉल ऐप्स जिसे हम कहते हैं, तो इसमें सिर्फ 4 ऐप्स अपार्ट फ्रॉम एसेंशियल ऐप, सिर्फ 4 ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड है, और उसमें से आप एक ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हो, और वो जो 3 ऐप्स इसमें आती है प्री इंस्टॉल्ड जो थर्ड पार्टी है, वो है फेसबुक जो आप डेफिनेटली यूज करते हो मेरे ख्याल से, मैसेंजर जो आप डेफिनेटली यूज करते हो, और इंस्टाग्राम जो आप डेफिनेटली यूज करते हो। और चौथी ऐप है जो आप डिलीट कर सकते हो और नीचे अनइंस्टॉल कर देना। इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी है ऑप्टिफ्लेक्स, जिसके द्वारा अगर आप फोन को यूज करोगे तो आपको इस हिसाब से फोन सीखेगा और ये प्रिडिक्ट करेगा कि आप कौन सी ऐप नेक्स्ट यूज करने वाले हो, और उसके हिसाब से ये ऐप को 86% फास्टर खोलेगा। प्लस जब आप ट्रे में जाओगे, इसमें ऐप ट्रे में, तो ऑटोमेटिकली आपके यूसेज पैटर्न के हिसाब से जो आप ऐप यूज करने वाले हो दूसरी, उसको लिस्ट कर देगा। इसकी जो एक्यूरेसी है वो 95% प्लस है ऐप रिकमेंड करने। और जैसे कि मैंने कहा कि इनबॉक्स एक्सेसरीज में आपको ये Asus का Zenfone Pro हेडसेट मिल रहा है, इसका आप एक्सपीरियंस जरूर करेंगे, Zenfone Pro का आप एक्सपीरियंस जरूर करेंगे। और साथ साथ आपको इस फोन के साथ बम्पर केस भी इनबॉक्स मिल रहा है, प्लस चार्जर, क्विक चार्जर 3.0 18 वोल्ट का चार्जर आपको इसके साथ मिलता है, तो कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स पैकेज है। ये फोन एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और इसका सेल 9 जुलाई को शुरू होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।